Namaskar and welcome to our brand new interview series Swadesh Samvad. I am your host Soumya Tare and I cannot think of a better guest to kickstart our journey of beautiful conversations, insightful conversations than Vivekanand Kendra Kanyakumari's All India Vice President, Miss Nivedita Raghunath Bhide. Miss Bhide became a Jeevan Vriti Karyakarta in 1977 and has held many responsibility all through these years. From 1993 to 2000, she became the guiding force for 43 Vivekanand Kendra-led schools in the tribal region of Daman, Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh. Author of more than 15 books, she was awarded the Padma Shri for her social work in 2017. While these all are the remarkable accomplishment, it is her simplicity, her grounded attitude and her beautiful smile that always steals the show. It is my absolute honor and privilege to be sitting here next to you and have a chance to interact with you. And I cannot thank you enough for accepting our request and agreeing to do this interview. Thank you so much. I would like to begin this interview by asking a question. I read somewhere that you were just 18 when you decided to dedicate your entire life to social work and thus of course the nation. What was the inspiration to do this? Was there a particular incident that inspired you to do it? The main thing is in my house such sanskaras were there. यानी घर का जो वातावरण होता है, माता पिताओं के जो संस्कार होते हैं, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है. हमारे परिवार के जैसे मेरे ताऊ जी है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूरा जीवन अपना लगाया उसमें काम किया है. मेरे माँ पिताजी यानी चाहे पहनने के लिए 2 साड़ी से माँ को तीसरी साड़ी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी समाज में जो अच्छे कार्य चलते हैं उसमें मदद करना, ये सब जो घर का वातावरण था. हमारे घर बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन आते थे, यानी जिसमें अच्छे विचार होते हैं जी. तो ये भी एक बहुत विशेष है कि इतने बड़े परिवार को सिर्फ वेतन को लेकर चलाना, एंड येट सीइंग टू इट दैट चिल्ड्रन गेट बेटर लिटरेचर टू स्टडी. So that somehow went very deep in me. When I was in class 8, I decided that I want to do something. I don't want to go on the usual beaten track. Nothing wrong with the track of getting married and all. Of course. That is also very much important. Good families are required. But I thought my mental makeup is not for that. Yeah. In class 8, I decided. I came to know about Vivekananda Kendra when I was in class 11. Okay. In those days, that was matriculation. Okay. So I decided, went and told my father that I will go to Vivekananda Kendra, Kanyakumari. Then he knew about it. So he said one has to be minimum graduate. Okay. Then I told all right. So after that 3 years I did my graduation. After I wrote my last paper, I came home and then sent letter to Kanyakumari. Asking Eknath ji that I want to join, so please tell me how to join. Oh my Eknath God, ji Ranade is the founder of Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra. Then I got a letter from him saying I am going to Delhi, that time I shall get down at Nagpur and you come there, I shall meet you. And that's how I Oh my God, that's incredible. How was meeting him? Oh, it was very nice because everyone told me Eknath ji is very strict. He will not select anyone like this. So, and what had happened, we had to fill up a biodata form. So, in that I wrote, means what books you read. So, when I was in class 4, I am too fond of reading. So, I had gone to my Nani's house, grandma's house, and there was no book in her house to read except her Jnaneshwari. Okay. So I took Jnaneshwari and read. I did not understand a single word, but I read. Full Jnaneshwari I read. So when they asked what books you have read, I wrote Jnaneshwari. Then I had tension if Eknath ji asked me question on Jnaneshwari, what shall I do? And then he may reject me. I was young, no? So that's how I was imagining. But then the moment I saw him,
एक्चुअली हिज पर्सनैलिटी वॉज सो रीअश्योरिंग, यानी उनको देखते ही मेरा सारा टेंशन चला गया। और फिर उन्होंने वही ज़्यादा बोले, यानी सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि उन दिनों में शायद ये मेजर यानी 21 का एज था। द एज लिमिट वाज 21 and I was not yet 19 complete when interview was conducted. Okay. So he said, you come after 2 years. Then I told, if you don't take me, I will go to Baba Amte's place. That is in our district, who works for leper and who has ashram. He is no more now. Then he started laughing. He said, you may want to go anywhere, but your parents will not allow you. I told, if I am firm, my parents will allow me. He said, okay, I will come to meet your parents. Then he went to Delhi. On way back, he got down at Wardha. I am from Wardha. Yeah. And he came home. I thought he had just like that told. And really one day, in those days, no telephone. Mobile is totally out of question, but even telephone was not there in my house. So one day, Eknath ji is standing in the door. Oh my God, that's brilliant. Very great. Very great. And then he asked my father. My father wanted me to do MSc, PhD and all that, because I was rank holder all along. Then my mother, there were tears in her eyes. Of course. But she never said, don't go. That was something great. Means when Eknath ji asked her, are you ready to send your daughter? So she was unable to speak. आँखों से आंसू आ रहे, तो उन्होंने सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाई बस। Today, Vivekanand Kendra holds a very prominent position in nation building. हम जिस देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे विवेकानंद केंद्र के जो प्रमुख प्रकल्प हैं और उनके पीछे ध्येय क्या है, उसके बारे में बता सकती हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद ने देखा था कि ये भारत भूमि फिर से उठने वाली है, पहले से भी अधिक वैभवशाली प्रदीप्त सिंहासन पर बैठकर, और उसकी शांति और मंगलमय शब्दों से उद्घोषणा कीजिए। तो वो जो भारत ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना है, उसके लिए पहले भारत को समर्थ बनाना है। वो बनाना है तो अपने देश में ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा होने हैं कि जो अपने जीवन में राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो परिवार चला रहे हो, अपना घर यानी व्यवसाय कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन जो भी काम करते हैं राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। फिर राष्ट्र के लिए काम करने के लिए निरपेक्ष भाव से, उससे कुछ मिलने वाला नहीं, कम से कम हफ्ते के 3 घंटे 4 घंटे देने के लिए तैयार हो। तो ऐसे लोगों को तैयार करना ये मनुष्य निर्माण, और उससे फिर ऐसे लोग जितने ज़्यादा हर क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, तो हर क्षेत्र में हम अपने भारत की विशेषता क्या है उसके अनुसार अनेक व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे। और उस प्रकार से भारत एकात्मता पर आधारित परिवार व्यवस्था कैसी होती है, समाज व्यवस्था कैसी होती है, ग्राम व्यवस्था कैसी होती है, शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, व्यापार व्यवस्था कैसी होती है, इसके उदाहरण खड़ा करेगा। तो ऐसा करने के लिए पहले लोगों में काम करना है। अभी अपने देश की स्थिति तो ऐसी थी कि कुछ लोगों को तो खाने के लिए नहीं है, ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में लोग हैं कि जिन्होंने कभी ना ट्रेन देखी है ना बस देखी है, ऐसे भी अपने देश के क्षेत्र है। तो पहले तो हमें सेवा कार्य करते हुए उन सबको उस स्तर तक लाना है। तो इसीलिए विवेकानंद केंद्र के 2 प्रकार के कार्य हैं, हम कह सकते हैं। पहला जो कार्य है वो जैसे नगरों में, शहरों में जाकर जहाँ युवा उपस्थित है, जहाँ वी कैन से मेन एंड मटेरियल, मीन्स बोथ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वी कैन ब्रिंग टुगेदर। तो फिर ऐसे युवाओं के पास पहुंचने के लिए फिर अलग अलग उपक्रम हैं। जैसे हम महाविद्यालयों में कुछ कार्यक्रम लेते हैं, फिर हम उनकी गतिविधियां में उनको धीरे धीरे जोड़ते हैं। फिर नित्य चलने वाले कार्य है, जैसे केंद्र वर्ग है, योग वर्ग है, स्वाध्याय वर्ग है, उसमें वो जुड़ते हैं। फिर बाकी लोगों के लिए भी जैसे योग वर्ग है, तो वो उससे जुड़ते हैं। फिर वो यानी
समाज में काम करने के लिए कुछ समय निकालते हैं। तो ऐसा ये जो है यानी हम कह सकते हैं कि लोगों के पास पहुंचाना और राष्ट्र की प्राथमिकता उनके जीवन में लाना। बहुत सारे लोगों के अंदर वो सुप्त इच्छा होती ही है, सिर्फ उनको जागृत करना है या उनको अवसर दिलाना है, उनको इसके बारे में पता होना है। तो ऐसे लोगों की खोज में जाना, ये एक मुख्य कार्य। दूसरा ऐसा है कि इससे जो सारी ऊर्जा निर्माण होती है, उस ऊर्जा को लेकर ऐसे जो क्षेत्र है जो मैंने बताया जहाँ सेवा की आवश्यकता है, तो ऐसे सेवा कार्य खड़े करना। तो जैसे विवेकानंद केंद्र के सेवा कार्य है, तो जैसे ग्राम विकास में सेवा कार्य है, फिर नैसर्गिक संसाधनों का जो विकास करना है उसके प्रकल्प है, फिर शिक्षा में बहुत बड़ा कार्य है, स्पेशली आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान, तो ऐसे सारे जगह में शिक्षा कार्य है। फिर सांस्कृतिक संशोधन के कार्य है, क्योंकि क्या हो गया कि हम सारे विविध है, हमारी भाषा अलग है, भगवान का नाम अलग है, उत्सव का नाम अलग है, ये तो सब है जी। लेकिन दुर्दैव से विविधता यानी अलगाव, हाँ। ऐसा एक इंटरप्रिटेशन होने लग गया। सो दिस कल्चरल रिसर्च इज दैट बियॉन्ड द डाइवर्सिटी देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कनेक्ट अस, करेक्ट, and what are those commonalities? So focusing on that, more we focus on that, our diversity is also respected mutually, and yet we stay one. So that is how these cultural research organizations, so like that various types of service projects. So these two types of work. On the similar note, I wanted to ask you that Jeevan Vrittis are considered the spine of Kendra, and of course you are one of them. If you could explain the concept of Jeevan Vritti to our unversed audience. स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, you know, he didn't know that he had to register first. He had to have some letter of introduction. So when he went for Parliament of Religions, he was told he cannot participate. Okay. And he wanted to participate, but the Parliament of Religion was postponed by 2 months. So it was at that time Swamiji suffered like anything. There was no money in his hand. So he wrote in one letter, I may die of cold and hunger. But in the same letter, you know, he writes that यानी मेरा जो होगा होगा, but यानी उनका सपना क्या था, तो वो लिखते हैं कि 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of our land, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up, gospel of help. तो ये जो स्वामी जी ने लिखा था, तो ये ऐसा कहते हैं ना, महान पुरुषों के विचार हमेशा रहते हैं, योग्य माध्यम की खोज करते हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए। तो एकनाथ जी ने इस विचार को पकड़ा। अच्छा। और जब विवेकानंद शिला स्मारक बना तो उनको लगा स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों में इतना आदर है, तो उनका स्मारक सिर्फ एक पत्थर में नहीं होना चाहिए, तो उनका जीवंत स्मारक होना है। यानी क्या, तो युवाओं के हृदय में कृति में स्वामी विवेकानंद का स्मारक होना है। तो ये जो स्वामी जी ने देखा था, लाखों स्त्री पुरुष युवक युवती देश के कोने कोने में जाएंगे, ये जो सपना था, इसको रूप देने वाला एक सेवा कार्य हमने खड़ा करना है। और ऐसा करते हुए उन्होंने विवेकानंद केंद्र स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन, अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन खड़ा किया। और उसका आधार यानी जिसको हम कहते हैं ना कैडर, वो कैडर उन्होंने जीवन व्रतियों की बनाने का पूरी योजना बनाई। तो उस समय तो केंद्र का कार्य कहीं था नहीं, तो उन्होंने ये भेजा, यानी क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दी कि दोज हु वांट टू डेडिकेट देयर लाइफ फॉर द कंट्री, they are welcomed here, they will be trained and sent to different parts of the country to do work. तो उस समय लोगों के रिस्पांस तो बहुत आए, खत पहले फर्स्ट रिस्पांस,
लेकिन जैसे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे तो घर के लोग रोने लगे वगैरह वगैरह, ये जो यूजुअल होता है कि बहुत अच्छा है, जीवन वृत्ति दूसरे घर से निकले, मेरे घर से नहीं जी। तो ये जो था, तो आखिर पहुँचते पहुँचते पहली बैच में 13 लोग पहुँचे और फिर उनको प्रशिक्षण देते हुए पूरे भारत भर में उनका फिर पोस्टिंग करना शुरू किया। तब से ऐसे जो युवक युवती जो अपना जीवन इस कार्य को देना चाहते हैं, तो अभी इसमें जैसे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इनके ऊपर कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होनी है घर की, बिकॉज देयर इज नो वेतन, यानी दे आर नॉट पेड एनी सैलरी और ऑनरेरियम और एनीथिंग, ओनली व्हाट आर आवर एक्सपेंसेस दैट आर टेकन केयर ऑफ, so they cannot support home financially, but whatever we need, that is taken care of, even if we fall sick or whatever it is. So that was one condition. Then they are to be of course young, then only whole life they can work for the country. So that is how the Jeevan Vrati scheme was started. Okay, interesting. Recently you unveiled your book, the second edition of Indian Culture Challenges and Potentialities, and of course like we were discussing, आपने शुरू में भी कहा परिवार संस्कार आपके ऐसे थे, तो एक हिंदुत्व की बात आती है. So I want to ask you, how do you perceive the concept of Hindutva? The problem is what, you know, what is the commonality? We have termed it as a part. So Hindutva is a way of life in which all types of upasanas can get incorporated, and each path of upasana has its own place, its own space. But unfortunately we started calling Hindutva also as one upasana. Okay. It's not a upasana, in that there are so many. For example, if I tell you some names like Singbonga, Bathau, Anedoni, Jitane, Rangfra, you don't know anything. But these are all our devatas, these are all our deities. So it is not that everywhere same deities we worship. Yeah. It is different. But our way of looking at the whole existence or Ishvara is same. So Hindutva is based on oneness of existence. And in oneness of existence there is respect for all diversities. Yeah. Second, that oneness is actually the Ishvara who pervades everywhere. So Ishvara is within me. So basically a human being is not a sinner, but he has to strive to manifest that divinity within. Yeah. That is his real nature. So that is second thing. And from that flows then many various values. So Hindutva or Hindu Dharma, Hinduism, I don't like the word. So all these words, they denote a way of life based on eternal principles of existence, of which the main is the vision of oneness. Understood. You travel across the world. I read that you have been to Australia, America. Just few places. But you have participated in a lot of seminars and conferences. I want to ask you, how is the world looking at us right now, looking at Bharat right now? What are their expectations from us? See, there are 2-3 ways. If it is politicians in other countries, they do not want India to rise. Okay. First. Second, if they are fanatic followers of their religion, fanatic followers, यानी मेरा ही रिलीजन रहना है दुनिया में, ऐसे यदि लोग हैं तो वो भी नहीं चाहते कि भारत भारत करके खड़ा हो. यानी भारत की विशेषता हिंदुत्व है. भारत का प्राण हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है. ये सनातन धर्म चला जाएगा तो भारत भारत नहीं है. लेकिन वो इस सनातन धर्म को ही नहीं चाहते हैं. तो वो इसको नष्ट करने के प्रयास में है.
You leave these two categories and go to the ordinary man. He has no problem with India. And more he comes in contact with Indians, actually they get charmed Okay. by the behavior of Indians. And those who know little bit of India, India means not politically that this party is ruling, not like that, but India, what makes India India. So those people, they respect very highly. Okay. So for example, in one place I was with this Kumkum, na? So just because I was with that, the people came to me with all respect Okay. to talk. Oh, you are from India. India, yeah. And when I had gone to Mongolia, I was in sari. Generally people when they go out, I don't know why they don't wear Indian dress. So I in a way was singled out. And so many people came to take my photos. Oh my And God. so beautiful, this dress is so beautiful. And then with dress, then they say you are beautiful, everything went on. You are. You indeed are. Whatever. So means their appreciation is for Indianness, Yeah. which unfortunately we don't represent when we go out. So that Indianness, those who know little bit of India and those who are thinkers, you know, they think about life, ultimately this consumerism or the way we are exploiting the nature, Correct. where it is going to take us. So those who think that, then they say India is the only way. Yeah. Means the path which India has shown is the only way. Ultimately, today, what new age spirituality literature is called as today, for which many persons have written books like Ken Wilber, Brian Weiss, and who is that, Fritjof Capra, and all that. Many such are there. So there, everything is based on only oneness, which we have always talked. Ekoham bahusyam, ya sarvam shaktimayam jagat, ya ishavasyamidam sarvam. Take any of our book, in that this oneness is there. Oneness of existence is there. And they find this is the only basis for protection of human society, protection of nature, protection of families, communities, for mutual respect, and also for raising the human life and giving a meaning to human life. There is one book, The Ultimate SQ, The Ultimate Intelligence, by Dana Johar and Ian Marshall. So they say the Hindu culture, they started going first to Nepal very frequently. They know about India also. So they say this culture alone can inculcate that oneness in you. It's not by listening to the lecture. So they see the significance of India. So while we are on the subject of Indian culture and like you talked about oneness, आज के समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो हमारे देश का ही युवा है, there is a disconnect with this particular concept. जब हम परिवार संस्कार की भी बात करते हैं, उसके बारे में भी पता नहीं है, या there is a disregard for marriage institution as well, like we talked about during our first question. How big of a challenge do you see it is, and what can be a possible solution? मतलब हम उनको कैसे समझा सकते हैं? क्या है ना, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे जो भी उसकी उपासना हो, वो चाहे जो भी उसके विचार हो, ये सारे स्किन डिप है. Okay. आप अंदर तक जाइए, क्योंकि ये जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये हजारों वर्षों की है. 8000 वर्षों से ये डीएनए खून हमारे धमनी में बह रहा है. तो आप बाहर के विचारों से कितने भी बदल जाए, आप थोड़ा ठीक से उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचिए, वो इस विचार को रिस्पॉन्ड करता ही करता है. Okay. समस्या ऐसी है, आज उसको ये बताया ही नहीं जाता है. The yuva is not, made acquainted with what is. So he only sees in media, he only listens on TV, whatever, and he gets carried away. Agreed. So he thinks then this is not fashionable, or what is modern, what is this, then what is this marriage and all, live-in relationship is fine.
इट इज़ सो पेनफुल। Yeah. यानी ऐसे युवक युवतियाँ वो कहते हैं हम विवाह तो करेंगे, बच्चे बिच्चे की झंझट नहीं चाहिए। यानी विवाह ये संस्कार है, उसका कोई प्रयोजन है, अच्छे बच्चे समाज को प्रदान करना, वही भूल गए वो। समाज धारणा करना वही भूल गए, बस हमें सिर्फ मजा करनी है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका प्रयोजन क्या है, ये सारा भूलते हुए आज हम सिर्फ अर्थ काम के लिए जी रहे। और अर्थ काम के लिए तो पशु भी जीता है, तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में फर्क क्या रहा। लेकिन ये सारा युवाओं को कोई समझाता नहीं है। और आज भी जैसे मैंने बोला, ये सारे विचार युवाओं के दिखते हैं, वो सारे स्किन डीप है। हम यदि उनके पास उनको समझे ऐसी भाषा में पहुंचते हैं और थोड़ा धैर्य के साथ उनसे संबंध बनाते हैं, इवन टुडे द युवा रिस्पॉन्ड्स वेरी ब्यूटीफुली। दूसरा ऐसा है कि आज का युवा ज़्यादा प्रामाणिक है। यानी उसको यदि कुछ पता ही नहीं है तो वो बोलेगा है ये क्या है, ये सारा अंधश्रद्धा है, ये सारी रूढ़ियाँ हैं, ऐसा बोलेगा। एक बार उसको सब आप समझा दीजिए तो वो उसके लिए पक्का खड़ा भी रहेगा। यानी ये है कि नहीं नहीं, मुझे बाहर के फायदे के लिए मैं ये भाषा बोलूँगा, अंदर बोलूँगा हाँ हाँ हिंदू धर्म अच्छा है और बाहर मैं उसका परिचय भी नहीं दूंगा। ऐसा एक ढोंगी स्वभाव जो हम दुर्दैव से देखते हैं, ब्रिटिश काल में धीरे धीरे हमारे बीमारी में ये बीमारी हमें हुई और शायद पिछली 1-2 पीढ़ी में वो ज़्यादा दिखती है। वो फॉर्चुनेटली आने वाली पीढ़ी में कम है और वो मेहनती भी है। तो इसीलिए समस्या सिर्फ हम युवाओं के पास इन विचारों को लेकर कितने प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं, बस यही एक विषय है। वी सेलिब्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव, द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके हिसाब से हमारे आगे के 25 साल के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए? व्हाट शुड बी आवर गोल? क्या है, स्वामी जी ने बताया था कि भारत ने मीन्स द इंडिया हैज टू राइज, बट इफ यू थिंक यू हैव टू रेज इंडिया ओनली फॉर हरसेल्फ, you shall never be able to do that. Okay. Don't forget, India has a message to deliver, a destiny to fulfill, a mission to accomplish, and that is to guide the whole world in spirituality. It means to give this vision of oneness. It means to inspire them how to live a life which is based on this truth of existence, of interconnectedness, interrelatedness and interdependence. So this India has to give to the world. If we remember the purpose of India, then and these 25 years, if concerted efforts we make, actually India is already in a take-off stage. But that taking off should not be only for Artha Kama. That taking off should not be only to build some hard power, but for this. And if that is clear, and fortunately many people are going into that. Many means the critical number we are not yet reached, but we have to reach. If it happens, but we are slowly getting there. When it happens, and we make concerted efforts with that sankalpa, then we can realize that dream of India as Vishwaguru to the world. See, few indications. For example, when Corona came, our country never selfishly thought that vaccines we will use only for ourselves. And there are countries like France and others who acknowledge that because India supplied us at a very critical time the vaccines for our medical staff, so we could manage. So we never calculated in that. So India has that inherent feeling of oneness with the whole world. And history is also witness that whenever India was powerful, rich, affluent, it has only taken the good thoughts, good ideas, culture to the whole world. And that's what will happen again. I'm just almost done. I just have 2 questions for you. I'll not keep you for long. You have inspired millions of people out there with your relentless and selfless work. How satisfied are you with your own journey, and what are your future plans?
See, basically, I am a कार्यकर्ता of Vivekananda Kendra. So I can never say that this is my personal journey. So journey is a collective journey. Now I cannot even say that this is only the journey of Vivekananda Kendra. There are so many such organized endeavors going on in our country, which are trying for raise India, and we are on the right track, no doubt. But we cannot be satisfied that oh सब अच्छा हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से आज वैचारिक आक्रमण हो रहा है, हम बोल सकते हैं we are in the thick of the battle. As the cultural invasion is there, so many narratives also are going on in the world, of which India is also of course a part. So to face those narratives, we cannot be happy that oh, our activities are going on very well. Activities are only a medium. Ultimately, it is the mind which should be with the nation. See, in olden days, if you want to capture a country, you had to physically go and capture a country. Later, it was physical invasion not required, but you had to capture the markets of the country. Today, even you don't have to capture the markets, just capture the minds. Then they will purchase only your product. So that is how it is. So it is the battle at subtler level, and the battle is very intense at present. So we cannot just say that oh सब अच्छा ही चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. हमें अपने प्रयत्नों की, प्रयासों की गति बढ़ानी है. One last question. If there is any message that you want to give to our audience right now, especially the youth of India. Just believe in India, believe in yourself, and keep away little bit of your selfishness. Don't live only for yourself. You are part of a great civilization, great nation, and this is the time you can make your life itself golden by living for the country. So I will say give maximum of your time for the nation. Now I being Jivanvrati, I can also say if you can give your life, that is the best. If giving life is difficult, give at least 2 years and work for the country. Go in interior areas, work there. Even that is not possible. Then third, which has to be done is give at least few hours per week to serve the society. There is no fourth option. Thank you so much. It was brilliant talking to you. Thank you. Thank you. Namaskar.